हांव घरा वतालो जवळ जवळ 1:45 जाल्ले तेन्ना आमी ताका पळयलो आनी लोक रावन थंय पळयताले ताका. तेन्ना तो जखमी आशिल्लो, ताका कोणी तरी गाडी मारली आसतली, पण तो जितो आशिल्लो आनी उठपाचो प्रयत्न करतालो. तेजे तोंडांतल्यान मात रगत मातशें येतालें. मागीर आमी खुबशे प्रयत्न केले फॉरेस्टाक कॉन्टॅक्ट करपाचे, पूण फॉरेस्टाक कॉन्टॅक्ट जायना जालो. मागीर आमी मार्दोल पुलीस स्टेशनाचे पुलिशेक कॉन्टॅक्ट केले नंतर एक पुलिसाची एक PCR आयली. तेंच्यांनी मागीर फॉरेस्टाक बी कॉन्टॅक्ट करून फॉरेस्टाचे लोक आयले, पिंजरो हाडलो, ताका पिंजऱ्यान घातलो. तेन्ना तो पिंजऱ्यान बी तो रावन आमकां पळयतालो, म्हणजे बरो आशिल्लो तो. असो आमच्या हांगा काजूय आसा. आमी फर्स्ट टायम पयले फावटी असो एक पॅन्थर पळयता, पण आमकां दिसून आयलें की आमच्या ह्या कोने सारकेल्या वाठारांत सुद्दां पॅन्थर आसा. आमी पयलीं पळयताले की बोडला बिडला त्या सायडीन आसा म्हणून अशें आमी आयकताले, पण हांगासर सुद्दां पॅन्थर आसा. आनी तो तेजेर वेवस्थीत अशे उपचार जावचे आनी हो जो पॅन्थर आसा तो जगचो. सरकारान हेजेर अशी जी जनावरां आसा तांकां लागून बरो ट्रिटमेंट करचो अशें दिसता. की अशे लोक म्हणटा की सरकारा कडेन काय ट्रिटमेंट करपाची काय सुविधाच ना म्हणून. पण सुविधा जर नासत, म्हाकाय खबर ना आसा काय ना ती, सुविधा जर नासत जाल्यार ती सरकारान तेजी सुविधा करची आनी अशी जी जनावरां जी आसा पॅन्थर सारकेले तांकां वाचोवपाचो प्रयत्न करचो. कारण येणाऱ्या काळान आमकां फक्त येणाऱ्या पिढीक ती पिक्चर दाखयचे पडटले, फोटो दाखयचे पडटले, पॅन्थर हो कोणाक पळोवपाक मेळचो ना. तेन्ना हांव देवा कडेन मागतां की तो पॅन्थर बरे भशेन आसचो म्हणून. आतां आमी पळयतात की मनीस जेन्ना खंय एक्सिडेंट जाता तेन्ना 108 पावतात, पूण जेन्ना तुमी म्हणटा की आमी फॉरेस्टाक कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न केलो, फॉरेस्ट कितल्या टायमान आयले? फॉरेस्ट आमी जवळ जवळ 1:45 कॉन्टॅक्ट करपाक लागलेले, ते 1:45 इतल्याक सुमार फॉरेस्ट आयले. ओके. हेच्या पयलीं तुमकां दिश्टी पडटालो तो भोंवतालो तो बीन हांगासर? ना ना, आमी केन्ना पळोवना. आमी फर्स्ट टायम पळयला. आमच्यो काजू हांगासर आसा तशें, पण आमकां केन्ना दिसूं ना. पण आमी म्हणटा की एक आमच्या ह्या जंगलान जर पॅन्थर आसा जाल्यार एक बरी गजाल. जेणे करून तो ब्लॅक पॅन्थर न्ही, ब्लॅक पॅन्थर तो सो रेर अशें म्हणटा दिसता. रेर मेळत ना पळोवपाक. आमकां हांगासर सादो तो बिबटो पळोवपाक मेळना, पूण एक ब्लॅक पॅन्थर जर आसा न्ही जाल्यार ती बरी गजाल आसा. ओके. सो तुमी म्हणटा की तो थंय तरी आसलो तेन्ना म्हणजे आशिल्लो, हय, आशिल्लो. तो उठपाचो प्रयत्न करतालो आनी पिंजऱ्यान जेन्ना घातलो न्ही तेन्ना सुद्दां तो उठोन उबो रावल्लो. म्हणल्यार स्टेबल जावपाक शकता. ताका फक्त ट्रिटमेंटाची ताका जर गरज ट्रिटमेंट जर दिलो न्ही बरे भशेन जाल्यार तो स्टेबल जातलो, हें शुअर. काल राती म्हणजे तसो फातोडेर आमकां 1:30-2 सुमार कॉल आयलो की ब्लॅक पॅन्थर म्हणजे लेपर्डूच तो, पूण तातूंत भितर एक मातशी दुर्मीळ तेंचें हें आसता की ब्लॅक पॅन्थर हो गाडी मारल्या कोन्या प्रियोळ हांगा. आनी मागीर आमी बेगीनूच ते सायटीर गेले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कॉल केलो, खूब जाणांक ट्राय केलो कारण रातचो टायम आसता. मागीर तांणी थोड्या वेळान एक वरभरान मागीर येता म्हणून सांगलें. तर थंय परिस्थिती अशी आसली की व्हडली एक गाडी मारून गेल्ली ताका आनी ब्लॅक पॅन्थरा सारको दुर्मीळ प्राणी आमच्या फोंड्यान आसा आनी असो तो मेळप म्हळ्यार केन्नाच कोणें पळोवना. आनी ताका गाडी मारली, कंडिशन सामकी वायट आशिल्ली, पूण म्हणजे तातूंत जीव आशिल्लो. म्हणजे जेन्ना आमी लागीं गेले, 1-2दां आमच्या आंगार येवपाक ट्राय केले किंवा जेन्ना जाळी घातली ताका रेस्क्यू करपाक तेन्नाय ताणें 1-2दां नेट काडलो. आनी म्हणजे थंयच्या हाजे कडल्यान अशें कळटा सुत्रा कडल्यान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांतले की सकाळ पर्यंत ताका जीव आशिल्लो. सो आतां सगळ्यान दुर्दैवाची बाब म्हणजे आमच्या गोंयची हें आसा की आमचे कडेन वायल्ड लायफ किंवा वन्य प्राणी जे आसा आनी अशे प्राणी जेंकां ट्रिटमेंटाची कांयच आमचे कडेन फॅसिलिटी ना. सद्या बोंडलाय बंद आसा, तांचो कितें डिसीज आउटब्रेक जाला म्हणून, पूण हरशीं सुद्दां एक इमर्जन्सी सर्वीस किंवा डॉक्टर हे जे आसा किंवा एक बाबा तांकां थंय व्हरून, कारण हें आतां लेपर्ड जो आशिल्लो ताका एक पेन किलर तरी जाय आशिल्ली किंवा इमर्जन्सी मेडिसिन्स आसता, ट्राय तरी करपाक. फर्स्ट एड सुद्दां जे आसा तें सुद्दां ताका दिवपाक कांयच मेळूना. कारण तातूंत ताका लागून कितें जाता की सकाळ पर्यंत तो आशिल्लो तसोच हें जालो आनी मागीर तो मेलो अशें म्हाका RFO साहेब जे आहा तांणी कळयलें. सो म्हाका अशें दिसता की परत हो प्रश्न जो आसा की वायल्ड लायफ आमी रस्ते बांदता हें सगळें चालू आसा, पूण ताजे बरोबरच वायल्ड लायफाची ट्रिटमेंट आसत किंवा तांच्या खातीर इमर्जन्सी सर्वीस
रातच्या टायमार, कारण थंय पोलीस आयिल्ले, बाकी सगळे जण लोक सुद्दां फोन केल्यावर आयली, मिडियाय कोण कोण पावले, पूण जे मेन येवपाक जाय तांकां टायम जालो. सो अशें इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम आसपा जाय अशें दिसता म्हाका. आयज आमी पळयता की डिझास्टराचेर आमी भरपूर प्रत्यक्षिका घेता, मॉक ड्रील घेता आनी कितें, पण असल्या गोश्टीचेर सरकार म्हणटा कांयच हें घेयना म्हणटा, तेज्या बद्दल कितें? हय, म्हणजे कांयच घेना, म्हणजे ताचेर आमी सरकारा कडेन परत परत हांवें हो प्रश्न मांडत आसा, पूण अजून पर्यंत तरी म्हाका कांय रिस्पॉन्स मेळूना. आनी हांवें एक तेंय बी मांडलां तेंचे कडेन की जर तुमचे करपाची तेजी इच्छा ना जाल्यार आमी करता, म्हणजे NGOs आसा, आमकां तुमी परमिशन दिया, आमकां फंड्स नाका, आमकां आनी कांयच नाका, आमकां फक्त परमिशन दिया, आमी तें मॅनेज करता, तुमचे मॉनिटरींग किंवा तुमच्या हाज्या अंडर करतले आमी, अशें न्ही की आमचे आमी करतले. पूण तें तरी एक करपाक जाय, कारण NGOs खुबशे अशे तयार आसा, फंड्सूय दिवपाक लोक तयार आसा. म्हणजे आमी जेन्ना आतां हांगा वायल्ड लायफ रेस्क्यू करता आमी आनी आमी ट्रिटमेंट करता, आमकां अशें लक्षांत येता की लोक पयशे दिवपाक, सगळी मदत करपाक रेडी आसा, पूण सरकारा कडल्यान किंवा परमिशन्स किंवा जो कितें सपोर्ट जाय तो हेज्या खातीर गरजेचो आसा. अराउंड 1:30 AM टुडे मॉर्निंग ये एक्चुअली ना इधर का लोकल्स एंड पुलिस पार्टी दे हैव फाउंड एक ब्लैक पैंथर ना साइड में ना इंजूर होके साइड में इट वाज ना अबाउट टू इनका ना लाइफ का ना थोड़ा सा ना वो लास्ट स्टेज का ऐसे इंफॉर्मेशन आया, देन इमीडिएटली विद द हेल्प ऑफ लोकल्स पीपल एंड पुलिस एंड हमारा फॉरेस्ट का टीम इधर आके ना वो देखा, मतलब थोड़ा सा ना इट वाज इंजूर्ड मोस्ट प्रोबेबली मे बी अभी वी आर सस्पेक्टिंग हिट बाय SPD व्हीकल, सो वो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा रियल रीजन. और वो आवर टीम फॉरेस्ट का टीम वो ब्लैक पैंथर को ना इमीडिएटली वी हैव शिफ्टेड एंड ट्राइड आवर लेवल बेस्ट रिकवर करने के लिए, बट वो हम उनको ना बचा नहीं पाया. सो अभी एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल उनका ना पोस्टमार्टम अभी करने जा रहे हैं विद दी वेटनरी टीम. सो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन अभी सीन ऑफ इंसिडेंट्स देखने के लिए आया अलग विद हमारे कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ एंड DCF नॉर्थ एंड DCF वाइल्ड लाइफ डिवीजन. अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद हमको ना एग्जैक्टली पता चलेगा व्हाट वाज द व्हीकल, टाइप ऑफ व्हीकल, हु वाज ड्राइविंग एंड इसके अलावा भी कुछ पता चलेगा उसमें से. तो उसके बाद हम एक नतीजे पे पहुंच सकता है, पर फिलहाल अभी हम पोस्टमार्टम करके ना वो जो भी एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल वो एनिमल को कैसे हम फर्दर उनका ना वो बरियल जो भी है वो करना है उसी के हिसाब से ना हम करने के लिए हम जा रहे हैं. बट इट इज़ एक्चुअली बिग लॉस टू अस टुडे. तो हमारा अपील है एक्चुअली ना वो जो भी है ड्राइवर्स पासर बाइज जो भी है वो थोड़ा सा ना वो रात को ड्राइविंग करते हुए थोड़ा सा केयर लेना चाहिए, बिकॉज दिस आर ऑल आवर गोवा इज हैविंग वेरी गुड बायोडाइवर्सिटी, गुड वाइल्ड लाइफ एंड ऑल. तो वाइल्ड लाइफ को देख के ना थोड़ा सा ना स्लो करके जाना चाहिए. ये एक अनटूवर्ड इंसिडेंट हो गया तो हम वी विल टेक आवर ऑल आउट एफर्ट्स, नेक्स्ट टाइम ना ऐसे नहीं होना चाहिए. सब जब उसका इंसिडेंट ये हुआ तब वो अच्छे तरह से लोगों को देख रहा था, जो लोग इधर थे वो आई विटनेस थे, वो लोग बोल रहे हैं कि वो देख पा रहा था, घुरा रहा था, लेकिन आपकी टीम ने उसको इधर कुछ ये किया, मेडिकल फैसिलिटी कुछ किया. वो एक्चुअली ना वो आप ठीक कह रहे हैं, उसमें हम भी वो वीडियो देखा है, वो थोड़ा सा ना वो जिंदा है उस टाइम ना, वो हमने हमारा टीम आया उस टाइम जिंदा है. उस टाइम ना जो हमारे ना उस टाइम रिकवर का प्रोसेस शुरू किया हमारी टीम, उसके बाद इमीडिएटली उनको लेके जाने के बाद वी हैव ट्रेन अवर लेवल बेस्ट फर्स्ट एड वगैरह देने के लिए. बट अभी वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कितना टाइम है, कितना रिएक्शन टाइम मिला है हमारे स्टाफ को उसमें वो बचाने के लिए, उसके बाद ही हम बता पाएंगे. इधर डॉक्टर लोग थे? हाँ, हमारा टीम है उधर ही, अभी वेट कर रहे हैं अभी. No, but नहीं रात को जब डॉक्टर इज अवेलेबल फॉर एनिमल 24 आवर्स तो वो नहीं. आपको नहीं लगता है सर कि 24 आवर्स 4 आवर्स जैसे आदमी को डॉक्टर की जरूरत है वैसे ही इन लोगों को भी जरूरत है करके? वो एक्चुअली बट ये एक्चुअली ना प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर है. हाँ. ये हमारा ना वो हम एक्चुअली वो जू सैंक्चुरी प्रोटेक्टेड एरियाज पे ना वो प्रोविजन होता है, बट इधर प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर है
और फॉरेस्ट एरिया के भी बाहर है। देखिए इधर से जू तो ज्यादा दूर तक नहीं है ना, कम से कम एक 20 किलोमीटर के अंदर है। बट वी हैव वो दैट इशू ऑफ वेटनरी असिस्टेंस इन जू एंड सेंचुरीज आल्सो, तो हम अभी टेकअप भी किया है गवर्नमेंट के तरफ से भी, तो वेरी सून इट विल बी एडमिस्ड। So when this zoo will be open for public? तो भी हम अभी ना वो टेस्ट रिजल्ट्स ना मेनी एस्पेक्ट्स में ना वो हम असरटेन कर रहे हैं, उसके बाद वेरी सून गवर्नमेंट But how many days it will take at least? नहीं वो अभी हम नहीं बता सकते, ओनली गवर्नमेंट विल डिसाइड। आमी आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आयज आयतार आसून सुद्दां येवपाचें इतलेंच कारण तें म्हटल्यारूच राती एक शेनवारा रातची गजाल एक अशीच पद्दतीची गजाल घडली जवळ जवळ 1:30 सुमार, ती म्हटल्यारूच ब्लॅक पॅन्थर हो जो एके गाडयेक कोने पिरू हांगासर एके गाडयेक आपटोवन तो इंजर्ड जालो। जेन्ना आमी त्या स्पॉटाचेर गेले तेन्ना जे कोण आय विटनेस आशिल्ले तेंच्यांनी आमकां सांगलें की जेन्ना आमी तो पळयला तेन्ना तो बऱ्यापैकी जितो आशिल्लो, घुरघुरतालो, उठपाचो प्रयत्न करतालो, पूण अशें कितें घडलें कोण जाणात। मागीर जेन्ना ताका फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान रेस्क्यू केलो तेन्ना थंयच्यान जेन्ना व्हरता आसतना आतां आमकां गजाल कळटा ती म्हटल्यारूच की त्या ब्लॅक पॅन्थराक खंय मरण आयिल्लें आसात। सो जेन्ना आमी चवकशी काडपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना आमकां अशी गजाल कळ्ळी की 24 वरां जो डॉक्टर आसता हो डॉक्टर हांगासर ना। जेन्ना मनशाक जेन्ना कितेंय जाता तेन्ना हॉस्पिटलां आसात, अशा तरेच्या हॉस्पिटलां आमी ह्या मुख्या प्राण्यां खातीर कित्याक बांदिनात, कित्याक सरकार ह्या गजाली खातीर फेल ठरता हें आमकां कळना। अजून मेरेन विश्वजीत राणे जे आसा हांचे कडेन ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा, फक्त चवकशी करता इतलेंच तेंचे कडेन आयकपाक मेळटा, पूण ह्या प्राण्या खातीर तेंच्यांनी आयज मेरेन मिनिस्ट्री मेळयल्याक कितें तरी तेंच्या खातीर कितें तरी केलां हें तेंच्यांनी सांगपाची गरज आसा। जेन्ना आतां आमी पळयलें तेन्ना सायडीचेर तेंचे रमेश कुमार IFF ह्या थंय आशिल्ले, जी स्वारके जे आशिल्ले हेवूय त्या स्पॉटाचेर आयज पंचनामा करपा खातीर गेल्ले। जो ब्लॅक पॅन्थर जो आसा हेका पोस्टमॉर्टमा खातीर सध्या हॉस्पिटलांत धाडलेलो आसा अशी माहिती कळटा।